Good morning, dear students. As as we have completed our first chapter of the civics in the Indian Constitution, I hope you are studying at your home, and it is to you that if you are studying in between line and reading the chapters in between lines, so I know that which is sent by self-made videos by me. So you are doing well in your home. Okay, so we are going to start now the question answers of the Indian Constitution. So why does a democratic country need a constitution? So as I told you कि democratic country के लिए constitution, why it is important, because of its lays out of important guidelines that govern decision making within the various societies of the country. Important constitution is a book which were the जिसमें क्या है, सारी क्या हैं, रूल्स लिखे हुए हैं. ठीक है, इट्स लेस डाउन द आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री that its citizens aspire to live in. It serves as a set of rules and principles as a basis by which the country has to be governed. Okay, so it is the basis that इसी के बेस पे क्या है कि कोई भी कंट्री में गवर्नमेंट गवर्न करती है. It provides rules to safeguard the interest of minority and prevent any kind of domination by the majority on minorities. Any kind of domination by the dominated अगर कोई चीज़ करते हैं by the majority to the minority, so it is a, इसमें क्या है, रूल्स हैं. ठीक है, एक सेफ गार्ड की तरह यूज करते हैं. It lays down rules that guard against the misuse of power by any politician leader. So ये भी किसी भी पॉलिटिशियन लीडर के जो मिसयूज है उसकी पावर का, तो वो भी इसको गार्ड करती है. इट ऑल्सो प्रोवाइड राइट्स टू इट्स सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम. सो फाइनली ऑल आर फ्रीडम, ऑल आर फ्री, ऑल आर इक्वल. सो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, look at the wanderings of the two documents given below. The first column is from the 1990s Nepal. 1990 Nepal constitution. The second column is from more recent interim constitution of Nepal. So कि ये आप इसमें देख सकते हैं कि 1990 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल में क्या था. एंड ये क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन हु एक्सरसाइजेज executive power in the above two constituents of Nepal. Keeping this in mind, why do you think Nepal needs a new constitution today? So कि नेपाल ने को constitution क्यों चाहिए था? Because of the difference in who exercise executive power in the given two constituents of Nepal is that in the 1990 constituent this power was vested in the king and his council of minister. तो 1990 से वहाँ क्या हो गया था, जो किंग की पावर है वो चली गई थी, वो किसके पास आ गई थी, मिनिस्टर्स की काउंसिल पे आ गई थी. एंड while in the 2007 interim constitution of Nepal, executive power changed hands to being vested only in the council of ministers, thereby making Nepal a democracy from being a monarchy. Nepal needs a new constitution today because it is no longer a monarchy. The older constitution vested power in the king, but when the country is now a democracy, a new constitution is needed to reflect the democratic ideals of Nepal that the people's movement desires and fought for. In order to achieve this, all its consecutive rules must be changed. So कि किस तरीके से जो है how the Nepal would be a democratic country, and किंग ने जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को किस तरीके से जो है अपनी जो है वो गवर्नर करने के लिए दिया. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नेपाल कंट्री टू मेक अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू बिकॉज ऑफ नो लॉन्गर ऑफ मोनार्की इन दिस कंट्री. सो इट इज़ अ पावर दैट टू बी हैड, वो किसके पास आनी चाहिए, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास आनी चाहिए, न कि किंग के पास. ठीक है,
What would happen in there was no restriction on the power of elected representatives. So if there are no restrictions on the power of the elected representatives, the leader might misuse the powers give to them. The constitution provides safeguard against this misuse of power by our political leaders. So it is in restriction on the power of elected representative. It is must to because of every person is elected by अस ठीक है। तो हम ही में से कोई भी आता है तो कोई भी क्या है मिसयूज कर सकता है पावर का। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ अ सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ पावर एंड इट इज़ मस्ट टू एन ईच कंट्री टू दैट कि किस तरीके से वो पावर का मिसयूज ना करें लीडर्स, और वो क्या करें अपनी पावर का सही तरीके से यूज करें टू फुलफिल देयर कंट्री नीड्स के बारे में सोचें। ओके तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं इसको कर लेना, बड़े क्वेश्चन हैं। सो यू विल डू दीज 3 क्वेश्चंस ओनली टुडे। ओके I'm not giving to homework more because of I know this is a problem create in the mobile to work doing okay in your copy. So I think कि जितना दे रहा हूँ उतना प्लीज़ उसको वर्क को काम करके मेरे को सेंड करो प्लीज़। ओके एंड देखो इट इज़ फॉर यू, वी आर ट्राइंग टू हम लोग तुम्हारे लिए यहाँ पर हैं। सो प्लीज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आवर फीलिंग ऑल्सो एंड डू योर वर्क।